स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो क्या इंपॉर्टेंस है इस वीडियो की और क्या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और क्या नया सीखने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को प्ले करने के लिए। लेट्स गो टू दी कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन होता क्या है? तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर कुछ लाइंस देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेलिंग प्राइस एंड अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ सेल्स। बेसिकली व्हाट इज दैट सर? बेसिकली दिस इज द डिफरेंस, अ डिफरेंस इज बिटवीन अ सेलिंग प्राइस एंड अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ सेल्स। सो यदि अगर इक्वेशन की बात करूँ यहाँ पर तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस minuses variable cost of a sale. It is so simple. So in a marginal costing, contribution is the base in the process of determining profitability of each product. So in the marginal costing में हम single product के अगर profitability calculate करते हैं तब हम contribution का इस्तेमाल करते हैं। It is so simple. While we in the marginal costing we calculated the each product profitability, that time we use a contribution. Now in the contribution how we use this one? So selling price minuses variable cost of a sale. It is simply. So when a two or a more product are manufactured, net profit per product cannot be ascertained as the fixed overhead are charged in the total to the profit and loss account. सिंपल सी बात है, यदि अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं तब ऐसे समय में नेट प्रॉफिट हम असर्टेन नहीं कर पाते। दैट नेट प्रॉफिट पर प्रोडक्ट कैन नॉट बी असर्टेन नहीं कर पाते। किसके मामले में? रिलेटेड टू द फिक्स्ड ओवरहेड आर अ चार्ज इन द टोटल टू द प्रॉफिट एंड loss account. Now at this condition हम क्या use करेंगे? Now in this condition we are going to be the use a contribution that determine what exactly the product is, mean which product gives a profitability to me or a not. Now hence a contribution per product plays a very important role in determining profitability of each product. तो जैसे कि मैंने कहा कि contribution के मामले में हम वो find out कर सकते हैं profitability each product की. So it is a surplus generated by the product for a recovery of a fixed cost. So what is that? A contribution is a surplus which is generated by the product for a recovery of a fixed cost. Now let me take a simple example that you can get exactly the idea what is exactly known as a contribution. So basically in this example we have a product A and we have product B. So in the product A we have a price, that is the selling price per unit rupees 100, and the product B selling price rupees 120 we have. And then after we have a variable cost 50 rupees to be there and the product B 80 rupees to be there. So between that one how we calculated the contribution? Now जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा कि contribution कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। Contribution we calculated with the help of that a selling price minuses variable cost of a sale. So in the example they given to me that the selling price per unit and a variable cost. So product A and the product B, we have a selling price of rupees 100, product B 120, variable cost is 50 and the 80 for the product B. So applying just only minus sign to there, it means selling price per unit minus variable cost contribution per unit. यदि अगर 100 में से 50 चले जाएंगे तो अमाउंट मेरे पास में आ जाएगी 50 रुपीज़. So contribution per unit product A is a 50 and the product B 120 minus is 80. We have answers to be there. The 40 is answer, my dear friends. So in the case of that one, basic example tha that how we know that the contribution for the product and contribution for the product B. So it is quite easy that contribution we generally cover a contribution is equal to selling price minuses variable cost at product or a sale.
So in this problem they gives to us a selling price per unit and a variable cost per unit. It means selling price per unit minus its variable cost. Product A, that is the 100 minus 50, we covered a 50. Product B, that is the 120 minus its 80, that we covered a 40. Now thus through the selling price of a product B, यदि अगर ये ऊपर के मामले में हम देखें तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट B की इज हायर देन द सेलिंग price of a product A. Yes, of course sir, it is correct. You can see in the product A 100 rupees यहाँ पर selling price है, product B यहाँ पर 120 product price है. So they suggested towards selling price of product B is a higher than, ये product B की जो selling price है वो higher है सर, कितनी higher है, 20 से higher है. Selling price of the product A, that should be the lower than the B1. The contribution per unit of a product B is less than the product of A. Now in the case of, यहाँ पर वाइस वर्सा कंसेप्ट देख लीजिए, यदि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट A के लिए सेलिंग प्राइस 100 है, प्रोडक्ट B के लिए सेलिंग प्राइस 120 है, तो ये हायर सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ पर वाइस वर्सा कंसेप्ट क्या चीज़ बन रही है, the contribution per unit of a product B, contribution per unit of a product B is less than product A. देखिए less than product A. That's why usually selling price includes an element of a profit. और यही वजह होती है कि selling price में हमारा profit include होता है. Usually selling price includes an element of a profit. So however product may be sold at a no profit, no loss basis or sometimes may be at a loss. So in the case of that one, while after the determining the contribution per unit, जब contribution per unit determine किया जाता है उसके बाद में हम ये decide कर सकते हैं कि product may be sold at a no profit, no loss basis या फिर कई मामलों में loss में ही sell किया जाए. Therefore the following equations can be used. यदि अगर ऐसा होता है तो कुछ equations हम use करते हैं. That are number A, that are the B and that are the C. For the A1 we have a contribution, so at that point how we calculate contribution sir? So is equal to fixed cost plus profit into the bracket. Now please, where a product is sold at a profit, if the product is sold at the profit level, at that time we use this equation, that is the A contribution is equal to fixed cost plus profit, my dear friends. Now B1 the contribution is equal to fixed cost is equal to होगी contribution की कब, where the product is sold at a cost, वही cost में sold की जाएगी तब. Number C1 contribution is equal to fixed cost minus its loss, where a loss is incurred. यदि अगर loss incurred होता है तो ऐसे समय contribution हमारा इस तरीके से होता है. So basically this is the point we related as the contribution. Hope so that आप लोगों को ये contribution के बारे में ठीक तरीके से मैं समझा पाया हूँ. चलिए देखते हैं next one point, that is a profit volume ratio. What is that exactly a profit volume ratio, my dear friends? Now the ratio or a percentage of a contribution of margin to a sales is known as a profit volume ratio. What is known as a profit volume ratio? Profit volume ratio is a percentage or is a ratio or a percentage of a contribution. Contribution के मामले में ये percentage होगा, एक ratio होगा जहाँ पर हम contribution margin to sales निकालेंगे. देखिए what they suggested to us, they suggested to us contribution margin upon sales. So जनरल सी बात है, ये हमारा क्या बन जाएगा सर, दिस इज नोन एज और इट इज नोन एज अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डिटरमाइन द इंक्रीज और अ डिक्रीज. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वो डिटरमाइन करता है जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पर डिक्रीज हो रहा है इन अ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इंक्रीज और अ डिक्रीज इन अ सेल्स वैल्यू. यदि अगर सेल्स वैल्यू में प्लस और माइनसेस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे समय में कंट्रीब्यूशन भी प्लस और माइनस में होगा. सो एट दैट दिस कंडीशन द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वी डिटरमाइन टू बी दैट दिस कंडीशन दे प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज. वो तभी डिटरमाइन किया जाएगा जब बाकी के फैक्टर्स जो इम्पैक्टेबल होते हैं प्रॉफिट के ऊपर वो अनचेंज होंगे. बेसिकली दिस इज द assumptions रिलेटेड इन द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विच सेट टू अस द constant of all price factors. Then we'll go for the calculate the profit volume ratio. Basically this is the profit volume ratio. Let me see
द फॉर्मूलाज फॉर द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के 3 तरीके के फॉर्मूलाज हमारे सामने हैं, दैट इज द ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड और दैट इज द सी कैटेगरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इन द ए कैटेगरी हाउ वी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. बेसिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट upon sales into 100. Okay, now second one we have the profit volume ratio is equal to contribution upon sales into 100. Second one formula, or if the any changes is given to us, then we'll apply this one formula, that is the profit volume ratio. We can see profit volume ratio is equal to changes in profit upon contribution upon changes in sales. ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? एट दिस कंडीशन. यू कैन सी दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन अ फिगर्स फॉर अ 2 सक्सेसिव ईयर्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम. यदि अगर फिगर्स दिए गए हैं 2 सक्सेसिव ईयर्स के, तब जाकर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को. ओके, दीज आर दी 3 formulas we have. Next one, a comparison for a profit volume ratio of a different product can be made to find out which product is more profitable. Profit volume ratio can be improved by. Okay, a comparison for the profit volume ratio of the different product को कंपैरिजन करने के लिए हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं. इसके मामले में क्या जानकारी मिलती है हमें? दैट मेड टू फाइंड आउट विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल. यदि अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये जानकारी मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और किस कीमत पर मैं उसको बेच सकता हूँ. दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी. सो विल अप्लाइंग द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट वी determine the each product profitability to be there, while for the profit volume ratio can be improved. So these are the 3 conditions we have to be applied to there as by these conditions. Let me go these conditions. Number first one, that is the increase the selling price per unit, reducing the variable cost per unit, C, adopting more profitable products. So these are the 3 conditions while we are using the profit volume ratio. Basically ये 3 condition ज़्यादातर दिखाई देते हैं. Let me take an example how we calculate a profit volume ratio, that you can get exactly idea that what is the profit volume ratio. If the following data is given, the variable cost rupees 160 per unit and a selling price rupees 200 per unit we have. So then a profit volume ratio is equal to, how we calculate this profit volume ratio? Let me put it out this information to there. So a selling price rupees 200 and variable cost rupees 160 per unit. Okay, for this condition I think number first one formula is applied to be there. Now which one? Now the second one, not to be the first one, the sales minuses variable cost upon sales, that is the 100. So basically this is related to that one, the contribution points of view. Profit volume ratio is equal to contribution upon sales into 100. So let's me go and apply this one for this condition. So then the profit volume ratio, number first or the number A formula, profit volume ratio is equal to contribution upon sales into 100. So is equal to contribution So how we calculate contribution? So we calculate contribution with the help of this formula, selling price per unit minus S variable cost per unit. So in this problem they given to us a selling price, that is the 200,
and a variable cost that is the 160. So basically the contribution comes is equal to 200 minus 160, that is the 40. So let me apply the formula, that is the contribution upon sales is equal to PV ratio. Contribution is a 40 and the sales is a 200 into 100. The amounts comes, let me go with that these equations, the amount is comes to be there or not. That you can get an exactly idea. So this is a 40 divided by 200 into basically answers comes, that is the 20%. Yeah, so basically this is the profit volume ratio, and the first one, that is a contribution. Thank you so much. दोस्तों यदि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। और यदि अगर YouTube पर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बाकी वीडियोस बेहतरीन वीडियोस भी आप देख सकें। और बेल आइकॉन को बिल्कुल भी दबाना भूलिए मत दोस्तों। जी हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू सो मच।